Assalamu alaikum, dear students. Welcome to today's video class. In this video class, we are going to learn uh, an important topic of social science. This is the powers of the Prime Minister. In yesterday's video class, we have read different ranks of ministers in Prime Minister's office. So, in today's video lecture, we will try to understand the about the main points of this topic, powers of Prime Minister. What does the Prime Minister have under his authority? So the constitution, let us start today's lecture. The constitution does not say very much about the powers of prime minister or ministers or their relationship with each other. The constitution जो है वो ज़्यादा कुछ हमें प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के रिलेटेड नहीं बता रही है या इस प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स के दरमियान किस तरह की रिलेशनशिप होती है, ज़्यादा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है. बट एज हेड ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स. चूँकि हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट का एक आला ओहदेदार होता है. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंज ऑफ पावर्स. इस बिना पर प्राइम मिनिस्टर के पास काफ़ी सारे पावर्स होते हैं. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, जैसा कि हमने कल के टॉपिक में पढ़ा कि कैबिनेट मीटिंग्स होती है जिसमें काफ़ी सारी इश्यूज़ के रिलेटेड डिसीजंस लेने में मिनिस्टर्स या डिफरेंट रैंक्स ऑफ मिनिस्टर्स के दरमियान एक मीट होती है. तो प्राइम मिनिस्टर चेयर्स इस कैबिनेट मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है. ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. प्राइम मिनिस्टर जो है ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं इनके दरमियान जो काम है, इन कामों डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो काम होते हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इनको कोऑर्डिनेट करने में प्राइम मिनिस्टर एक अहम रोल अदा करता है. हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स. जब भी डिपार्टमेंट्स के दरमियान किसी तरह का तनाज़ा या किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट होता है डिसीजन लेने में, तो प्राइम मिनिस्टर इन डिसएग्रीमेंट्स को दूर करने में एक अहम रोल अदा करते हैं. ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स. जो डिफरेंट मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं इनके वर्क को सुपरवाइज करने में प्राइम मिनिस्टर एक अहम रोल अदा करते हैं. ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप. प्राइम मिनिस्टर के अंडर तमाम मिनिस्टर्स काम करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क टू द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर के पास ये भी पावर्स होते हैं कि ये डिफरेंट जो असाइनड वर्क्स होते हैं मिनिस्टर्स के दरमियान इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है. ये प्राइम मिनिस्टर के पास इतने पावर्स होते हैं कि ये किसी भी काम को किसी मिनिस्टर के हाथ से निकाल भी सकता है और किसी दूसरे मिनिस्टर को इस काम के लिए
اس کام کے لیے اپوائنٹ کر سکتا ہے. He also has the power to dismiss ministers. پرائم منسٹر کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی منسٹر کام کرنے میں کوئی کوتاہی یا لاپرواہی برتے، پرائم منسٹر کے پاس اتنے پاورز ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی منسٹر کو ڈسمس کر سکتے ہیں. وین دا پرائم منسٹر کوئٹس دا انٹائر منسٹری کوئٹس. اور جب بھی پرائم منسٹر کسی وجہ سے کوئٹ کرے، کسی وجہ سے ریزائن کرے، تو انٹائر منسٹری جو اس کے انڈر کام کرتی ہے ان کو بھی کوئٹ کرنا پڑتا ہے. Thus, if cabinet is most powerful institution in India, within the cabinet it is prime minister who is most powerful. اگر ہمیں پتہ ہے کہ جو کیبنٹ ہے یہ ایک ہائیسٹ رینک آف اتھارٹی ہے، اگر کیبنٹ جو ہائیسٹ رینک پاورفل رینک ہے تو اس کیبنٹ کو چلانے میں پرائم منسٹر ایک اہم رول ادا کرتا ہے. پرائم منسٹر ان کا ہیڈ ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر ایک پاورفل اتھارٹی ہے. The powers of prime minister in all parliamentary democracies of world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسیز میں ان کا رول جو ہے، ان کے جو پاورز ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں. سو ان پارلیمنٹری ڈیموکریسیز سم ٹائمز پرائم منسٹریل فارم آف گورنمنٹ از سین. سو آج کل کے جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے ان میں پرائم منسٹریل فارم آف گورنمنٹ ہی زیادہ دکھائی دیتی ہے. As political parties have come to play a major role in politics, the Prime Minister controls the cabinet, parliamentary and parliament through the party. جو political parties have come to play a major role in politics. Political parties جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اہم رول ادا کرتی ہے. سو پرائم منسٹر کنٹرولز دا کیبنٹ اینڈ پارلیمنٹ تھرو دا پارٹی. جو کہ پارٹی جس پارٹی کا پرائم منسٹر ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر ایک انڈیویژول باڈی بھی، انڈیویژول کیپیسٹی میں بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور آن دا بیسس آف پارٹی ریکمنڈیشنز بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور ان کے ڈیسیجنز میں پارٹی جو ہے انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے. The media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of party. In India too, we have seen such tendency towards the concentration of powers in hands of Prime Minister. Jawaharlal Nehru is first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over public. Jawaharlal Nehru ہندوستان کے پہلے پرائم منسٹر تھے. اندرا گاندھی واز آلسو اے پاورفل لیڈر کمپیئر ٹو ہر کولیگس ان دا کیبنٹ. اندرا گاندھی بھی ایک فرسٹ وومن پرائم منسٹر تھی ہندوستان کی، اور یہ مانا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر اندرا گاندھی ایز پرائم منسٹر بہت ہی پاورفل پرائم منسٹر تھی ایز کمپیئر ٹو ہر کولیگس. Of course, the extent of power wielded by prime minister also depends on the personality of person holding that position. So ایک چیز ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے، پرائم منسٹر کی ڈیسیجن میکنگ کیپیسٹی یا پرائم منسٹر کی انٹیلیجنس کیپیسٹی اس چیز پر بھی ڈپینڈ ہے کہ پرائم منسٹر کی پرسنالٹی کتنی ڈیولپ ہے، پرائم منسٹر ایز اے پرسن کتنا انٹیلیجنٹ ہے، اور ایز اے پرسن اس کے پاس کتنی ڈیسیجن میکنگ کیپیبلٹیز ہے. However, in recent years, the rise of coalition politics has
imposed certain constraints on power of prime minister. The prime minister of coalition government cannot take decisions as he likes. He has to accommodate different groups and fractions in his party as well as among the alliance partners. He also has to heed the views and positions of coalition partners and other parties on whose support the survival of government depends. हमें पता है कि रिसेंट ईयर्स में कोलिशन पॉलिटिक्स हैज़ इम्पोज सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ रुकावटें आई है इन रिसेंट ईयर्स, जैसा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई गवर्नमेंट बने किसी एक ही पार्टी से। रिसेंट ईयर्स में जब भी गवर्नमेंट बनती है तो इस तरह से इलेक्शन मैंडेट इनका होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। ज़्यादातर कोलिशन गवर्नमेंट बनने से प्राइम मिनिस्टर की जो पावर कैपेसिटी है इसमें कुछ रुकावटें भी आती है कोलिशन पार्टनर्स से, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर को कोलिशन पार्टनर्स के जो आइडियाज़ है, कोलिशन पार्टनर्स के जो डिसीजंस है, इनको भी मद्देनज़र रख कर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के पावर एट्रीब्यूशन में कुछ रुकावटें पैदा करती है। He also has to heed the views and positions of coalition partners. जब भी ये कंडीशन हो कि कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है या कोलिशन गवर्नमेंट हो, तब कोलिशन पार्टनर्स के डिसीजंस या कोलिशन पार्टनर्स के व्यूज़ एक प्राइम मिनिस्टर को कंसिडर करने पड़ते हैं, और ये चीज़ें प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी या पावर वगैरह है इसमें कंस्ट्रेंट्स यानी रुकावटें बनती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज topic, the powers of prime minister. In next class we will be with you with another new topic. So till the next class, stay blessed, stay at home, and try to recapitulate the today's class. Thanks for watching.